ट्रेनिंग बेटा एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड स्टार्ट कर लेंगे बेटा। Am I audible to everyone बेटा? Expansion of liquids. चलो फर्स्ट पॉइंट देखो बेटा, on heating liquids, क्या करेंगे बेटा? एक्सपैंड करेंगे। on heating liquid expands more than solids, है कि नहीं? हीटिंग करने से liquids expands more compared to your solids. उसी तरह से you know that liquid do not have definite shape, isn't it? And definite length also. So can I say that hence linear and aerial expansion are not defined for liquids. उसको shape और length न रहने की वजह से we couldn't able to define for them the linear and aerial expansion. ठीक है ना? So linear and aerial expansions are not defined for your liquids, and liquids expands more than your solids. ठीक है ना? अब ये देखिए बेटा, the liquid आप इसमें भी डालोगे ना, it will take that shape. So can I say that the liquids occupy the volume of container. ग्लास में डालो तो ग्लास का शेप लेगा, कोई भी बॉल में डालो तो बॉल का शेप ले लेगा, isn't it? So hence I can say the liquids occupy the volume of container, and hence when heated we can define two volume expansions. We can define two volume expansions for a liquid. What are they, beta? Number one, real expansion. First one is real expansion of liquid define करेंगे, और उसके बाद will be defining your apparent expansion of liquid. ठीक है ना? So liquids occupy the volume of the container, and hence when heated it can define two volume expansion. एक तो real expansion of liquid, another one is right now for me apparent expansion of your liquid. Am I clear with this one? ठीक है ना? We have two volume expansions for a liquid. Sure. Next slide, very important. Relation between real and apparent expansion of a liquid. Okay. Relation between real and apparent expansion of liquid.
apparent expansion of a liquid, a relation between real and apparent expansion of a liquid, दोनों के बीच में रिलेशन। ठीक है, यहाँ देखो, लेट्स से मान के चलो मेरे पास एक कंटेनर है इस तरह से, दिस इज अ नेक, और ये हो गया इसका बॉटल, स्पेसिफिक ग्रेविटी बॉटल जैसा होता है ना, अपने प्रैक्टिकल्स में देखा होगा, केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल्स। तो ये हो गया इसका माउथ, ठीक है, और इसमें पानी भरा हुआ है बेटा, लाइक मान के चलो यहाँ तक अपने को पानी भरा हुआ, ठीक है ना, दिस ब्लू ब्लू वाला है ना पूरा, दिस वन इज योर वाटर which is been filled in the specific gravity bottle. ये हो गया मेरा पॉइंट ए, ठीक है ना। मार्क 2 पॉइंट्स ऑन दिस वन बेटा, एक पॉइंट है और इसके ऊपर यहाँ पर एक पॉइंट है। आई एम टेकिंग दिस वन एज बी एंड दिस वन एज सी। होता क्या है बेसिकली, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस गिवन कंडीशन, ये जो है दिस विल बी योर area of cross section, or I can say that it is area of your system, or area of cross section of a system, that is represented by letter A, ठीक है। अगर मैं इसको देखो, यहाँ पर देखो ए बी जो है ना, राइट ना, व्हेन कीपिंग द लिक्विड इन ए कंटेनर, और इसको जब हीट करोगे आप, जैसे आपने इसको हीट किया तो एक्सपेंशन इन द वेसल विल बी फर्स्ट मोर कंपेयर टू लिक्विड, तो उसकी वजह से क्या होगा, लिक्विड ज्यादा एक्सपैंड करेगा, तो लेवल ऑफ लिक्विड ए से बी आ जाएगा, फिर उसके बाद लिक्विड विल बी एक्सपैंडिंग वेरी फास्टर कंपेयर टू द वेसल, देन द लिक्विड विल गो फ्रॉम बी टू सी। तो पहले लिक्विड कहाँ से भरा था, ए तक, जैसे आप हीट करोगे ना, तो वेसल का एक्सपेंशन पहले थोड़ा ज्यादा रहता, तो वो थोड़ा एक्सपैंड कर जाएगा, जैसे ही थोड़ा एक्सपैंड कर जाएगा, लेवल ऑफ लिक्विड ए से बी गिर जाएगा, उसके बाद लिक्विड इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद दैट टेम्परेचर इज गिवन टू द लिक्विड, जैसे ही टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड रेज करेगा, द लिक्विड विल रेज फ्रॉम बी टू सी, दैट इज अ फाइनल पोजीशन जहां तक वो एक्सपैंड कर सकता है। सो नाउ ए टू बी, बी टू सी और ए टू सी आर नथिंग बट लेंथ्स। सो अगर देखो मैं यहाँ पर इसको कैसे लिख रहा हूँ, इट्स ए बी इंटू योर ए से मल्टीप्लाई करो, ए बी मतलब क्या है, लेंथ इंटू इट्स एरिया, so length into area will represents me what beta, volume, so I can say that this will represents me the increase in volume of vessel, वॉल्यूम ऑफ वेसल, क्योंकि ए से बी तक जा रहा है बिकॉज वेसल एक्सपैंड कर रहा था, तो ए बी को अगर मैं एरिया से मल्टीप्लाई करूं, उस लेंथ को एरिया से मल्टीप्लाई करूं, सो लेंथ इनटू एरिया विल गिव मी व्हाट बेटा, वॉल्यूम, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू एरिया इनटू लेंथ होता है ना, तो इट विल गिव मी द इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ वेसल। उसी तरह से अगर मैं बी सी को B into C into its area of cross section मैं कर दूं, that will be giving me the real expansion, that will be giving me right now for me what, real expansion of your liquid, this will be your real expansion of liquid, real expansion of liquid, यानी I can write here right now delta V real change in the volume will be equal to original volume coefficient of real expansion into temperature difference delta T, ठीक है ना। देन उसके बाद ए सी इंटू ए से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ए टू सी क्या रिप्रेजेंट करेगा, देखो बेटा, ए टू सी विल रिप्रेजेंट्स मी दी अपैरेंट, जो अपने को दिखाई देता, अपैरेंट एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड, अपैरेंट एक्सपेंशन ऑफ योर लिक्विड, that is expansion of liquid relative to the vessel बोल सकता हूँ, in the bracket we can write expansion of liquid, expansion of liquid relative to vessel, relative to vessel, that is called as apparent expansion। जैसे दूध अपन गर्म करते हैं वेसल में, तो अपन को एक्सपेंशन ऑफ वेसल नहीं दिखाई देता, डायरेक्टली दूध का उबलना ही दिखाई देता, एक्चुअली होता है क्या, वेसल पहले थोड़ा एक्सपैंड कर जाएगा, उसी के लिए लेवल ऑफ द लिक्विड इन दैट वन विल फॉल डाउन, देन फ्रॉम आफ्टर दैट द लिक्विड विल राइज, लेकिन अपने को दिखाई देता कहां से, डायरेक्टली ए टू सी दिखाई देता, तो वो अपैरेंट है, तो इस AC into A is nothing but apparent expansion of liquid, that is also called as expansion of the liquid relative to the vessel। am I clear, ठीक है ना। मैंने इसको टेम्परेचर T1 डिग्री सेल्सियस से
T2 डिग्री सेल्सियस तक इंक्रीज किया, मान के चलो 0 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस जो भी होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो डेल्टा वी अपैरेंट कैसे लिखता हूँ बेटा, डेल्टा वी अपैरेंट विल बी इक्वल टू एक्चुअल वॉल्यूम कोफिशिएंट ऑफ अपैरेंट एक्सपेंशन इनटू डेल्टा टी लिख सकते हैं। तो सी फ्रॉम फिगर, अब फिगर को अगर थोड़ा देखो, सीधा फिगर वन से बेटा क्या कहना, राइट, P2C will be equal to BA plus AC. P2C from figure I can write PC will be equal to B2A plus A2C. Can I write like that? चलो अब क्या करो, B2C को BC मल्टीप्लाई करो विद एरिया, BA को भी मल्टीप्लाई करो विद एरिया, प्लस AC को भी मल्टीप्लाई करो विद एरिया। तो उसके बाद क्या करो, इसको आप BC इंटू योर A को डिवाइड करो बाय योर वॉल्यूम इंटू डेल्टा टी, ओरिजिनल वॉल्यूम इंटू टेम्परेचर डिफरेंस, दैट इज इक्वल्स टू BA into your A divided by V into delta T, original volume of the vessel into temperature difference. ये हो गया AC into your A divided by V into delta T. डिवाइड कर सकता हूँ ना, क्योंकि कैंसिल करें तो फिर वापस मेरे को ही आएगा, ठीक है ना। अब इसको देखो, BC into your A क्या था बेटा, BC into A is real expansion, so I can write that one as of what, gamma R. So this is coefficient of your real expansion is equals to BA will be equal to BA बोलो और RA बोलो, this will be your apparent expansion plus of expansion of glass. So this will be your relation. Gamma R is equals to gamma A plus of your gamma G. ठीक है, so coefficient of real expansion is equals to apparent expansion plus of your expansion of your glass. या मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, coefficient of real expansion is equals to apparent expansion plus gamma of glass can be written as 3 times of alpha of your glass. Can write like this because gamma is 3 times of your alpha, so I can write even like that given condition. Am I clear with this one? Gamma R is equals to gamma A plus 3 times of alpha of your glass, और gamma R is equals to gamma A plus of your gamma G. फिर से एक बार, तो डेरिवेशन वैसे भी ज्यादा यूज नहीं है, डायरेक्टली आप याद रखना है कि रिलेशन बिटवीन रियल एंड अपरेंट एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड का क्या फॉर्मूला होगा, गामा रियल इज इक्वल्स टू गामा ए प्लस ऑफ योर 3 टाइम्स ऑफ योर अल्फा ऑफ ग्लास, और गामा आर इज इक्वल्स टू गामा ए प्लस गामा ऑफ योर ग्लास पार्ट ऑफ रिलेशन। तो गामा आर क्या होगा बेटा, मैं एक बार आपको लिख देता हूँ यहाँ पर, कोएफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपेंशन, गामा आर इज नोन एज ऑफ योर coefficient of real expansion, coefficient of real expansion of your liquid. ठीक है बेटा, whereas gamma ये क्या होगा बेटा, gamma ये will be ठीक है बेटा। सो गामा ये क्या हो जाएगा बेटा, गामा ये इज नोन एज राइट नाउ फॉर मी कोएफिशिएंट ऑफ apparent expansion, coefficient of your apparent expansion of liquid, coefficient of apparent expansion of liquid। और गामा ऑफ ग्लास क्या हो जाएगा बेटा, गामा ऑफ G is equals to कितना लिखा था, 3 times of alpha of glass, that means this will be equal to your what from your volume of coefficient of your glass or coefficient of your glass बोल सकते हैं, isn't it? So volume of your coefficient of your glass. Okay, am I clear? Am I clear? Any doubt in this one? Why not 3 gamma coefficient of apparent expansion? क्या बोले बेटा, समझ में नहीं आया मुझे। Why not 3 times of gamma? What will be 3 times of gamma? ऑलरेडी गामा है ना बेटा मेरे पास, अल्फा बीटा का रिलेशन है ना,
We know that gamma is equals to 3 times of alpha. So alpha will be equal to gamma divided by 3. या उसको बीटा में भी लिख सकता हूँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. बीटा is equals to 2 times of alpha. तो alpha is equals to बीटा by 2 भी लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं. ठीक है ना. चलिए, one note better here. कोफिशिएंट ऑफ ये थियरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा. गामा आर ऑफ ए लिक्विड यानी कोफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपेंशन. गामा आर ऑफ ए लिक्विड इज independent of nature of material और nature of vessel. चाहे वेसल गोल्ड का बना हुआ हो या सिल्वर का बना हुआ हो या कॉपर का बना हो, उससे कोई मतलब नहीं है. कोएफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड इज इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ लिक्विड, बट गामा ये of a liquid, gamma A of a liquid changes from container to container, from container to container. ठीक है ना. Gamma R of a liquid is independent बेटा. Gamma R of a liquid is independent. Gamma R of a liquid is independent of your nature of your vessel. But if I see here right now, gamma apparent, gamma A of a liquid changes from your container to container. जैसे जैसे container change होगा, apparent expansion of your liquid जो भी होगा, that is also going to change. Am I clear with this one? क्या यहाँ तक क्लियर है? बस एक ही फॉर्मूला अपने को फर्स्ट में, गामा आर इज इक्वल्स टू गामा ए प्लस गामा ऑफ ग्लास, और गामा आर इज इक्वल्स टू गामा ए प्लस 3 टाइम्स ऑफ अल्फा ऑफ योर ग्लास. क्लियर? Am I clear with this one? आया सभी को समझ में सभी को? ठीक है ना. So on heating, liquids expands more than solids. Liquids do not have any definite shape and length. Hence, linear and areal expansion of liquids are not defined for the liquid. The liquids occupy the volume of the container, and hence when heated we define two volume of coefficients of liquid. एक तो real होता है, another is apparent. Real और apparent के बीच में जो relation है, that is real apparent expansion is equals to gamma apparent plus gamma of your glass. Gamma of glass नहीं दिया, अल्फा दिया, रख दो, और gamma की जगह 3 times of alpha डाल दीजिए. And gamma R of a liquid is independent of nature of liquid, and gamma apparent of a liquid will depend upon the nature of liquid. That is the reason it changes from container to container. Am I clear with this one? छोटा सा क्वेश्चन देखो बेटा, वेरी फेमस क्वेश्चन. मान के चलो मेरे पास एक लिक्विड है, a liquid when heated in silver, and glass vessels respectively, I can say that corresponding apparent expansion coefficients are S and G. S and capital G. Okay? If capital A is the linear coefficient, of silver, isn't it? Then find linear coefficient of glass. पहले क्वेश्चन को समझो अच्छी तरह से, डोंट रन. पहले क्वेश्चन को तोड़ो मोड़ो, then you try to understand the first concept, then you try to do that. हाँ, मैं क्लास नोट्स भेज दूंगा बेटा. When a liquid when heated in silver and glass vessels respectively, corresponding apparent expansion coefficients are S and G. किस में? सिल्वर एंड ग्लास. ग्लास के लिए कितना है? S है, सॉरी सिल्वर के लिए S है और ग्लास के लिए G है. And if A is the linear coefficient of silver, then find the linear coefficient of glass. Done? चलो एक बार देख लीजिए. अब देखो, आप सिल्वर में हीट करो या ग्लास में हीट करो, डजंट मेक एनी डिफरेंस. गामा आर ऑफ योर सिल्वर, आई टोल्ड यू राइट नाउ,
is equals to gamma real of your glass. Coefficient of real expansion तो depend नहीं करेगा ना बेटा, it is independent ही हो जाएगा basically. So I can say that coefficient of real expansion of your silver is equals to coefficient of real expansion of glass. तो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या? गामा अपैरेंट मतलब क्या हो जाएगा? गामा रियल इज इक्वल्स टू गामा अपैरेंट ऑफ योर सिल्वर प्लस 3 times of alpha of your silver is equals to gamma apparent of your glass plus this is 3 times of alpha of glass. क्या कुछ ऐसा लिख सकता हूँ है कि नहीं? देखो, और इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करूँ. गामा अपैरेंट ऑफ सिल्वर कैसे दे रखा है? एस से रिप्रेजेंट करा है प्लस अल्फा ऑफ सिल्वर कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इज गिवन बाय योर लेटर ए, that means 3 times of A is equals to gamma apparent of glass is represented by capital G plus this one is 3, this one is alpha of glass. ये अपन को निकालने का. So alpha of your glass will be equal to how much बेटा? S plus 3 times of your A. This one is right now divided by your R minus C हो जाएगा minus G. ये इधर चले जाएगा तो minus G divided by 3. So coefficient of your alpha of your glass is equals to S plus 3A minus G divided by 3. Very good. Am I clear with this one? Am I clear with this one? Sure. Keep a note better. Very important point. Point number 1. If gamma real is greater than gamma of glass, what happens? Coefficient of real expansion is greater than the coefficient of the glass. Then देखो यहाँ पर gamma apparent will be equal to gamma real minus gamma of glass. तो R बड़ा है, ये वाला छोटा है, तो ऑब्वियसली आपको जो रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव आएगा. अगर रिजल्ट आपको पॉजिटिव आया, इसका मतलब लेवल ऑफ द लिक्विड क्या हो जाएगा इसके अंदर? Level of liquid it will rises, isn't it? Level of liquid it will rise. ये हो जाएगा increase कर जाएगा. ठीक है ना? Point number 2. अगर if gamma real जो है ना lesser than gamma of glass होगा, then अगर मैं इसको लिखूं तो क्या हो जाएगा? देखो, gamma apparent will be equal to gamma real minus gamma of glass. तो ये कितना आ जाएगा? छोटे में से आप बड़े को निकाल रहे हो, तो दिस विल बी आंसर विल गेट इन टर्म्स ऑफ नेगेटिव. अगर आपको नेगेटिव में आंसर आया तो लेवल ऑफ लिक्विड क्या होगा? इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? अपैरेंट एक्सपेंशन डिक्रीज होगा. सो कैन आई से हियर राइट नाउ लेवल ऑफ लिक्विड डिक्रीजेस. लेवल ऑफ लिक्विड डिक्रीजेस. ठीक है ना? वेरी गुड. अगर दोनों इक्वल है बेटा, ठीक है ना? थर्ड वन, इफ गामा रियल इज इक्वल्स टू गामा ऑफ ग्लास के बराबर है, isn't it? Then I can say that gamma real is equals to, और गामा अपैरेंट कितना बन जाएगा बेटा? 0 के बराबर. और ये ऐसा भी लिख सकते हो, गामा रियल इज इक्वल्स टू 3 times of अल्फा ऑफ ग्लास बोला, तो गामा अपैरेंट कितना आ गया? 0. गामा अपैरेंट अगर 0 आ गया, इसका मतलब क्या होगा बेटा? कोई बताएगा? What will happen? The level of the liquid does not change. Very good. So what happens? Level remains same. Level remains same. But this is important. But volume of liquid in container increases. This is important. ठीक है ना? So level of liquid क्या हो जा रहा है? Level of liquid remains the same. But what is happening right now for me? But the volume of your liquid in container will increases. It will increase. ठीक है ना? और यहाँ पर decrease. Am I clear with this one? Am I clear with this one? Constant. Very good. So if gamma R is greater than gamma G, then it will be positive.
gamma r is lesser than gamma g, then it will be negative. If gamma r is equals to gamma g, then gamma apparent is equals to 0. Am I clear? Am I clear? How volume will increase? Stasiya, किस में बेटा वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है? वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इन ए कंटेनर. अच्छा, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड इन द कंटेनर. देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, गामा आर इज इक्वल्स टू गामा ऑफ ग्लास, और आप इसको हीट कर रहे हो, लेवल विल रिमेन सेम, क्योंकि दोनों भी एक्सपांड कर रहा है ना बेटा. देखो मान के चलो कंटेनर है इसमें इस तरह से, और यहाँ तक पानी भरा हुआ है, isn't it? इनिशियली मान के चलो इसको यहाँ तक कहीं तक पानी भरा हुआ है. अब दोनों एक्सपांड कर रहे हैं, तो दोनों एक्सपांड कर रहे हैं, तो ए भी ऊपर जाएगा, ए भी ऊपर जाएगा, ए वाला जो पॉइंट है ना अभी यहाँ पर कहीं पर आएगा, isn't it? सब कुछ इंक्रीज हो रहे हैं, तो वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड इससे पहले यहाँ था, यहाँ गया, तो वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड से इंक्रीज हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है ना. सोचो लॉजिकली, कोई चीज में आप इंक्रीज कर रहे हो गामा रियल में, लेवल रिमेन्स दी सेम बोल रहा है. लेवल कब सेम रहेगा? अगर दोनों का भी एक्सपेंशन सेम हो, दोनों का भी एक्सपेंशन सेम है, दोनों भी बढ़ रहे हैं, तो व्हाट इज हैपनिंग टू द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड इन द कंटेनर? वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड इन द कंटेनर विल इंक्रीज. Am I clear? Next one, very important point beta, very important for competitive examinations. Star mark कर दीजिए. So condition for volume of empty space, जैसा डिफरेंस इन द लेंथ होता है ना सॉलिड में, उसी तरह से remains constant at all temperatures. ये वाला सेम सिचुएशन अपने को सॉलिड्स में भी आया था. कोई भी टेम्परेचर में अगर दोनों का डिफरेंस सेम हो तो कंडीशन क्या होना चाहिए? अल्फा 1 L1 अल्फा 1 मस्ट बी इक्वल टू L2 अल्फा 2. याद है? हाँ, वैसा वाला ही कंडीशन है यहाँ पर. ठीक है ना. पहले आप डायग्राम को समझो, फिर उसके बाद विल ट्राई टू डू द प्रॉब्लम, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. ये मेरे पास एक वेसल है मान के चलो, इस तरह से एक स्पेसिफिक ग्रेविटी बॉटल है. ठीक है ना. और उसके बाद मैंने क्या बोला, इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया मैं टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से. ये जो वॉल्यूम है ना, ऐसा कुछ बन गया रफली. ठीक है ना. अब देखो यहाँ पर थोड़ा टर्म्स लिख रहा हूँ मैं पहले. गामा जी विल बी दी वॉल्यूम ऑफ योर, और वी जी लिख लेता हूँ मैं बेसिकली, वरना कोफिशिएंट हो जाएगा. पहले वॉल्यूम से लिख लेता हूँ. वी जी इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ ग्लास और वॉल्यूम ऑफ कंटेनर. बोलो वॉल्यूम ऑफ ग्लास और वॉल्यूम ऑफ कंटेनर. VL is equals to वॉल्यूम ऑफ लिक्विड हो जाएगा. ठीक है ना. एंड गामा L will be equal to coefficient of real expansion of liquid. Coefficient of real expansion of liquid. Gamma L, coefficient of real expansion of your liquid. ठीक है ना. Gamma G बोलो या 3 times of alpha of G बोलो. That will be what right now for me? Coefficient of volume expansion. Coefficient of volume expansion of vessel के लिए. Condition क्या था बेटा? Volume of empty space should remains constant at all temperature. आप हीट करने के बाद, यानी यहाँ पर लिख रहा हूँ देखो, condition is change in volume of your vessel must be equal to change in volume of liquid. जितना वॉल्यूम वेसल बढ़ेगा उतना ही वॉल्यूम लिक्विड में भी बढ़ना हो. ठीक है ना. यानी आई कैन राइट हियर राइट नाउ फॉर दिस वन, वेसल के लिए गामा ऑफ ग्लास, isn't it, and volume of the glass into delta T. Change in volume is equals to original volume gamma of glass into delta T is equals to volume of your liquid VL, isn't it, or VL कुछ भी लिखो,
और दिस वन विल बी गामा ऑफ योर लिक्विड इनटू डेल्टा टी। दोनों का टेम्परेचर सेम है ना बेटा, टेम्परेचर फॉर बोथ ऑफ देम आर सेम, तो डेल्टा टी कट गया, तो डेल्टा टी कट गया मेरे पास यहाँ पर, तो देन आई कैन राइट हियर राइट नाउ वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ योर ग्लास will be equal to gamma of your glass divided by gamma of liquid. This is the condition. अगर स्पेस बिटवीन द एम्प्टी स्पेस अगर कॉमन होना है या कांस्टेंट होना है तो कंडीशन क्या हो जाएगा, Vg gamma g must be equal to VL gamma L. Am I clear with this one? Am I clear with this one? In this case also level of liquid क्या हो जाएगा बेटा, बढ़ेगा. This is also very important. In this case बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ेगा, लेकिन वॉल्यूम क्या बोलते हो, डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा एम्प्टी स्पेस का. सो इन दिस केस level of liquid increases. ठीक है ना, हमें क्लियर बेटा. चलिए और एक छोटा सा पॉइंट है वो देख लीजिए, फ्रैक्शन के बारे में बात कर रहा हूं. फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड taken in the vessel, fraction of liquid taken in the vessel such that volume of empty space remains constant at all the temperatures is VL divided by Vg. ये फ्रैक्शन हो जाएगा, that will be equal to gamma glass divided by gamma of your liquid. ठीक है ना, इसको फ्रैक्शन भी बोल सकते हैं, राइट. फ्रैक्शन ऑफ योर लिक्विड taken in the vessel such that volume of your empty space is remaining constant at all the temperatures is what? This will be the answer. Am I clear with this one? Am I clear बेटा? एक छोटा सा न्यूमेरिकल मैं आपको एग्जांपल्स के साथ करवा दो, then you'll get an idea how the problems will be based on this one. Okay. If example, if gamma of mercury is equals to 180 into 10 power minus 6 and alpha of glass is equals to 9 into 10 power minus 6 per degree Celsius. Okay, my question is then fraction of volume of mercury to be taken such that empty space remains the same. ये YouTube पे भी लाइव जा रहा है बेटा, आप लोग चाहे तो बाद में रिवीजन के टाइम पे भी देख सकते हो. एट ऑल टेम्परेचर्स इज, चलो करिए जल्दी से. गामा ऑफ योर mercury दे रखा है और अल्फा ऑफ ग्लास दे रखा है. फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम पूछ रहा है, फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ व्हाट, mercury, यानी वॉल्यूम ऑफ लिक्विड की जगह क्या डालोगे, अब mercury डालोगे, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ये हो गया ग्लास विल बी इक्वल टू गामा ऑफ योर, ये कितना हो जाएगा बेटा, ग्लास डिवाइडेड बाय गामा ऑफ योर mercury. गामा ऑफ ग्लास मतलब कितना, 3 times ऑफ अल्फा ऑफ ग्लास डिवाइडेड बाय गामा ऑफ mercury, that is equals to 3. अल्फा ऑफ ग्लास दे रखा है कितना बेटा, 9 into 10 power minus 6 divided by gamma of mercury is 180 into 10 power minus 6. ठीक है ना, इसको अगर मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहा हूँ तो कुछ कट रहा है क्या, देखो 10 power minus 6, 10 power minus 6 will get cancelled right now for, isn't it? 3 9s are 27 divided by 180. ठीक है ना, so that means this will go again right now, थोड़ा कैलकुलेट हो जाएगा, isn't it? किसमें जाएगा बेटा, कितना आएगा, वेरी गुड, 3/20.
ठीक है ना, 9 में चले जाएगा, 9 3 जा 9 20 जा, यानी दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1/7, 3 1 जा 3 7 जा 21 आता है ना, बट अप्रोक्सीमेटली बोला, 20 को मैंने 21 मान के चल रहा हूँ, नियर, तो अप्रोक्सीमेट कर दोगे, तो दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, अप्रोक्सीमेटली लिख रहा हूँ, दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1/7, क्लियर है? हाँ, क्लियर? कोई डाउट है इसके अंदर? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट is also very important. Specific gravity bottle. Specific gravity bottle method. इसके लिए to find gamma apparent. डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, बस फॉर्मूला याद रख लीजिए, that is more than enough. Okay, determination of coefficient of apparent expansion. इसको यहाँ पर ब्रैकेट में लिखो, for determination of gamma apparent निकालने के लिए, ठीक है ना? Specific gravity bottle method for calculating the value of gamma A. इसका फॉर्मूला लिख लीजिए, gamma apparent is equal to mass of liquid expelled, mass of liquid expelled है ना, बाहर जो गिरा हुआ है, divided by mass of remaining liquid, mass of your remaining liquid into temperature difference, into temperature difference. This will be the gamma apparent. इसका अच्छा खासा प्रूफ हुआ करता था जमाने में, अभी तो कुछ नहीं, तो डायरेक्टली आप याद रख लीजिए, gamma apparent specific gravity bottle method is being used to calculate the coefficient of apparent expansion of liquid. तो gamma apparent is equal to what? Mass of liquid expelled, यानी जो liquid बाहर गिर चुका है during expansion, and remaining liquid into temperature difference. यानी इसको अगर मैं mathematically लिखूं, gamma apparent will be equal to expelled liquid divided by, problem करते से टाइप पे, remaining liquid multiplied with your temperature difference. This will give me the gamma A. ठीक है ना? तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एक्सपेल्ड कैसे लिखोगे बेटा? वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एक्सपेल्ड, वॉल्यूम ऑफ योर लिक्विड एक्सपेल्ड, यानी डेल्टा V एक्सपेल्ड change in volume will be equal to original volume gamma apparent into temperature difference, है कि नहीं? यानी डेल्टा V expelled, volume expelled is equals to original volume, gamma apparent will be equal to how much beta? Gamma of real minus 3 times of alpha of glass, या gamma of glass लिख लीजिए, multiplied with your delta T, so that will be the volume. ठीक है बेटा, मैं क्लियर? मैं क्लियर? सर कैलोरीमेट्री में भी अब तक क्या ये एक्सपेंशन में क्या कैलोरीमेट्री भी आता है क्या एक्सपेंशन में? नहीं बेटा, कैलोरीमेट्री फिर सेपरेट करना पड़ेगा, उतना पूरा तो करने तो अपने पास टाइम ही नहीं होगा, और ऑनलाइन में आप लोग को समझ में भी नहीं आएगा, ठीक है ना? ऑफलाइन में ही पढ़ाएंगे उसको, उसका टेंशन मत लीजिए, सिर्फ सॉलिड्स और लिक्विड्स और कैलोरीमेट्री पे देखिए, यूनिट्स एंड डायमेंशंस भी था। हाँ, कैलोरीमेट्री भी यही वीक में था, मुझे आइडिया नहीं है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, अगर है तो एक बार मैं पढ़ा लेता हूँ, शायद कल को कॉलेज होगा ही, शायद मेरे ख्याल से रफली नहीं हुआ तो फिर एक बार थोड़ा लॉन्ग ले लेके कैलोरीमेट्री भी कर लेंगे, ठीक है ना? गामा अपैरेंट का फॉर्मूला एक्सपेल्ड डिवाइडेड बाय रिमेनिंग इनटू डेल्टा टी कर दो, दैट विल गिव मी द आंसर, ठीक है? सो गामा अपैरेंट इज इक्वल्स टू मास ऑफ योर लिक्विड एक्सपेल्ड
divided by mass of your remaining liquid into your temperature difference. Into your temperature difference. ठीक है ना? Am I clear with this one? Am I clear with this one? Any doubt to anyone? When to use this formula? ठीक है, चलो एक प्रॉब्लम मैं करवा देता हूँ. You will get an idea. Example देखिए. तो मान के चलो क्वेश्चन कुछ ऐसा है. Specific gravity bottle. Specific gravity bottle is heated to 100 degrees Celsius. Okay. The percentage of liquid expelled. The percentage of your liquid expelled नहीं, ये देखो 1% of liquid expelled, comma 100 degrees, comma the 1% of liquid is expelled in the bracket. Initially, it is completely filled with liquid. It is initially filled with your liquid. My question is find gamma apparent of liquid. ठीक है ना? A specific gravity bottle is being heated to 100 degrees Celsius. 1%, the 1% of liquid is been expelled. क्यों? क्योंकि initially it is completely filled with liquid. Find the gamma apparent. So gamma apparent का फॉर्मूला क्या है बेटा? Expelled divided by remaining into temperature difference. है क्या ना? Expelled कितना है बेटा? 1% of liquid is been expelled. Remaining कितना होगा? 99. 1% is expelled. Divided by remaining कितना हो जाएगा? 99. Into temperature difference कितना है बेटा? 100. 1% मतलब कितना हो जाएगा बेटा? Isn't it? So this will be the answer. 1% divided by 99. 1% of the liquid is been expelled. So remaining कितना हो जाएगा? 99% बचेगा. Isn't it? 99% बचेगा. So इसको मैं यहाँ पर percentage में लिखता हूँ. 99% बचेगा. तो percentage वैसे भी चलेगा. So it is 1 by, this will be how much will be? 99 into your 100. ठीक है ना? आया? Expansion of gases is written in portion, not calorimeter. अच्छा, प्रॉब्लम देखते हैं. जितना होता है उतना तक तो करो ना बेटा. पहले इसी के अंदर देखो बेटा, कंटिन्यूशन. इन दी अबव प्रॉब्लम, जरा सोच समझ के करना. इन दी above problem, if 1% remaining liquid, 1% of your remaining liquid is expelled, then gamma apparent निकालो. क्या बोल रहा है? 1% of remaining, one problem है, 1% of remaining liquid is expelled. अब remaining तो मुझे नहीं मालूम कितना है, तो मान के चलो if I am assuming remaining is x, तो expelled कितना हुआ? 1% of that one. तो expelled मैं लिख सकता हूँ, expelled is equals to 1% of your x, यानी this will be x divided by 100 लिख सकता हूँ. तो gamma apparent is equals to expelled लिखेंगे divided by remaining लिखेंगे into temperature difference. ये तो फॉर्मूला है ना गामा अपैरेंट का. ठीक है ना? तो गामा अपैरेंट विल बी इक्वल टू एक्सपेल्ड कितना है बेटा? x डिवाइडेड बाय 100. रिमेनिंग कितना था? x. जो टेम्परेचर डिफरेंस कितना है? 100. यानी दैट विल बी इक्वल टू x डिवाइडेड बाय 100 into x into 100. तो कुछ करते हुए दिखाई दे रहा है क्या? x और x तो कट गया. It is 1 by, ये हो गया 10 power 4, and this will be 10 power minus 4 per degree Celsius. That will be the answer.
हमें क्लियर आया बेटा? क्लियर? क्वेश्चंस को जरा अच्छी तरह से प्रैक्टिस करो बेटा, दैट विल गिव मी द आंसर फॉर दैट। चलिए नेक्स्ट हेडिंग लिख लीजिए, वेरिएशन of density of liquid with temperature. Last time अपन solid से करे थे, अभी we are talking about variation in the density of the liquid with temperature. With temperature, ठीक है ना? डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? डेंसिटी रो इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम लिख दो, isn't it? So as temperature increases, the volume of liquid also increases. अगर वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इंक्रीज हुआ तो डेंसिटी डिक्रीजेस, बट मास क्या रहेगा? कांस्टेंट, बट मास रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है? सो एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड ऑल्सो इंक्रीजेस। अगर वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड इंक्रीज हो रहा है तो डेंसिटी क्या हो रहा है बेटा? डिक्रीज हो रहा है, लेकिन क्या रिमेन कांस्टेंट है बेटा? मास इज रिमेनिंग फॉर मी कांस्टेंट, ठीक है ना? ये तो मैंने ऑलरेडी कर चुका हूं, हमें क्लियर? चलिए, कोएफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपेंशन क्या होता है बेटा? कोएफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ योर रियल एक्सपेंशन यानी गामा आर इज इक्वल्स टू V2 minus V1 divided by V1 into temperature difference, T2 minus T1 हो जाएगा, ठीक है ना? This is a coefficient of real expansion. तो मान के चलो at T1 is equals to 0 डिग्री सेल्सियस के पास रो नॉट डेंसिटी है, रो नॉट is equals to density of liquid at 0 डिग्री सेल्सियस। उसी तरह से at T2 is equals to some T डिग्री सेल्सियस के पास डेंसिटी को मैं ρ2 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मींस दिस विल रिप्रेजेंट्स मी द डेंसिटी ऑफ लिक्विड at T डिग्री सेल्सियस। बस समझ में आई? T1 के टेम्परेचर के पास यानी 0 डिग्री सेल्सियस के पास मैं डेंसिटी को ρ0 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और T डिग्री सेल्सियस के पास आई एम रिप्रेजेंटिंग इट बाय द ρT, ठीक है ना? तो माय गामा वॉल्यूम टू क्या मैं डेंसिटी में लिख सकता हूँ अभी? कोएफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपेंशन विल बी इक्वल टू मास बाय डेंसिटी एट T डिग्री सेल्सियस माइनस मास बाय डेंसिटी एट 0 डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाय mass by density at 0 degree Celsius into T2 minus of T1, ठीक है ना? तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ तो दिस वैल्यू विल बिकम हाउ मच बेटा? लास्ट टाइम मैंने किया मास विल गेट कैंसिल, डेंसिटी एट 0 डिग्री सेल्सियस माइनस डेंसिटी एट T डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाय डेंसिटी एट T डिग्री सेल्सियस इनटू टेम्परेचर डिफरेंस इज T, क्योंकि T1 तो 0 था और T2 इज राइट नाउ फॉर मी T, यानी डिफरेंस से T2 माइनस T1 कितना आ जाएगा? T माइनस 0 दैट इज इक्वल्स टू T आएगा। दैट इज द रीजन आई हैव टेकन दैट वन एज ऑफ योर T। हमें क्लियर बेटा? तो गामा आर कैसे लिखा मैंने यहाँ पर? गामा आर इज इक्वल्स टू ρ0 माइनस ρT डिवाइडेड बाय ρ at T डिग्री सेल्सियस इनटू टेम्परेचर, ये हो गया गामा आर।
अब इससे बाकी की पूरी कहानी आप चला सकते हो बेसिकली सीधा सीधा, ठीक है। इसको अगर डेंसिटी 80 डिग्री सेल्सियस निकालना है तो जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखो राइट नाउ रो नॉट माइनस रो टी is equals to this one is rho at t degree Celsius gamma r into your t, यानी रो नॉट विल बी इक्वल टू, ये इधर चले जाएगा तो रो एट टी विल बिकम कॉमन इंटू वन प्लस गामा ऑफ रियल आ जाएगा इंटू टेम्परेचर टी। तो डेंसिटी एट टी डिग्री सेल्सियस कितना हो जाएगा बेटा, डेंसिटी एट टी डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू रो नॉट डिवाइडेड बाय वन प्लस गामा आर इंटू योर टी। सो दिस विल बी द डेंसिटी एट योर टी डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। चलो एज डेंसिटी एट 0 डिग्री सेल्सियस इज ग्रेटर देन डेंसिटी एट टी डिग्री सेल्सियस, क्यों, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस डेंसिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो इनिशियली ज्यादा रहेगा और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ते जाएगा उसका डेंसिटी क्या हो जाएगा बेटा, बढ़ जाएगा, कम होते जाएगा। सो इनिशियल डेंसिटी इज ग्रेटर देन दिस वन बिकॉज एज टेम्परेचर इंक्रीजेस व्हाट हैपेंड टू द डेंसिटी, डेंसिटी डिक्रीजेस। बात दिमाग में याद रखो इसको, ठीक है ना। दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज व्हिच आर बीन यूज्ड टू ऑल द न्यू। छोटा सा नोट ले लीजिए जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला बनता है बेटा। मान के चलो एट T1 डिग्री सेल्सियस अगर डेंसिटी मैं से लिख रहा हूँ रो नॉट इज इक्वल्स टू रो वन इंटू वन प्लस गामा ऑफ योर रियल एक्सपेंशन इंटू टेम्परेचर T1। उसी तरह से एट T2 डिग्री सेल्सियस के पास डेंसिटी एट 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू रो टू इंटू वन प्लस गामा आर इंटू टेम्परेचर इज T2, ठीक है ना। ठीक है बेटा, हमें क्लियर, दोनों की इक्वेट कर दीजिए। दिस इज इक्वेशन नंबर वन, दिस इज इक्वेशन नंबर टू। Equating 1 and 2. So I can write here rho 1 into 1 plus gamma real into T1 is equals to rho 2 into 1 plus gamma real into T2. ठीक है बेटा, दोनों को इक्वेट कर दीजिए, देखो क्या हो रहा है। आई एम इक्वेटिंग दिस कंडीशंस, ठीक है। कितना होगा बताइए, रो 1 से मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको। दिस वन इज रो 1 प्लस रो 1 इंटू गामा रियल इंटू T1 is equals to रो 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ प्लस रो 2 इंटू गामा रियल इंटू T2, ठीक है ना। तो रो 1 माइनस रो 2 इस जगह निकालो, रो 1 माइनस रो 2 इज इक्वल्स टू, ये कितना बन जाएगा बेटा, इधर इधर आ जाएगा माइनस, ये वाला इधर जाएगा तो राइट नाइट विल बिकम फॉर मी नेगेटिव, यानी इट इज रो 2 गामा आर इंटू T2 minus rho 1 gamma r into T1. यानी for this one I can write the relation gamma r to be common. So this is gamma r को मैं common ले रहा हूँ. So this will be rho 2 into T2 minus rho 1 into T1. So it is rho 1 minus rho 2. ठीक है ना? So if I'm writing the value of gamma r now, gamma real will be equal to rho 1 minus rho 2 divided by, this will be rho 2 into T2 minus rho 1 into T1. So now this is something very important formula to be remembered. Gamma real is equals to rho 1 और rho 2 में लिख रहे हैं, so that will be equal to gamma real is equals to rho 1 minus rho 2 divided by rho 2 T2 minus of your rho 1 into your T1. Am I clear with this one? Am I clear? Any problem to anyone?
डेरिवेशन की जरूरत नहीं है बेटा, वी जस्ट नीड टू रिमेंबर द फॉर्म। ठीक है, मैं एक प्रॉब्लम करवा देता हूँ, एक दो प्रॉब्लम्स विल गेट एन आइडिया। ठीक है, एक एग्जांपल ले लीजिए। सीधा क्वेश्चन, फाइंड द टेम्परेचर at which the density of liquid becomes 1% of its density 1% of its density at 0 degrees Celsius. If gamma real is equals to 9.9 into 10 power, some whatever the value अगर लेना है basically that value you can take it out and simplify for the given condition. Gamma की value ले रहे हो, coefficient of the gamma 10 power of -3 -4 जो भी लेना, so -3 per degree Celsius. ठीक है ना, चलो ट्राई करिए। फाइंड द टेम्परेचर बोल रहा है, देखो डेंसिटी एट 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू डेंसिटी एट टी डिग्री सेल्सियस इंटू 1 प्लस गामा रियल इंटू टी, यही मेरे पास फॉर्मूला है, ठीक है ना। Rho naught is equal to find the temperature at which the density of the liquid becomes 1% of its density at 0 degree Celsius. Done बेटा। Find the temperature at which the density of the liquid becomes density at T degree Celsius is equals to 1% of its density at 0 degree Celsius. 1% मतलब 1/100 into density rho naught, यानी ये हो गया rho naught divided by 100, यानी ये हो गया rho naught, rho at T will be equal to rho naught divided by 100 into this will be equal to 1 plus gamma of real into temperature T. So rho naught से cancel हो गया यहाँ पर, this one will get cancelled, so this is your 100 that is equals to 1 plus gamma of real into T, ठीक है ना। तो gamma real into T will come out for me बेटा how much, 100 minus 1 that will be equal to 99. तो coefficient of real expansion भी दे रखा है बेसिकली प्रॉब्लम में, isn't it? Coefficient of real expansion is given for me in the problem. We need to calculate the temperature. So temperature T is equals to 99 divided by gamma of real. And that will be equal to 99 divided by gamma real की वैल्यू कितना दे रखा है, 9.9 into 10 power minus 3, ठीक है। तो कितना आ रहा है देखिए, this one is 99 divided by, this is also 99 divided by your, this will become how much for me, 10, बताइएगा। This will be 10 into 10 power minus 3. समझ गया, ठीक है। ये वाला चले जाएगा, 1/10 मतलब ये ऊपर चले जाएगा बेटा, 10 divided by 10 power minus 3, यानी that will be equal to 10 power plus 4. This will be equal to 10 power 4, ठीक है ना। ठीक है, थोड़ा पावर्स में चेंज हो रहा है, अगर गामा आर में 10 पावर माइनस 2 लेता, ठीक है ना, यहाँ पर लिखो इफ, ग्रीन पेन से लिख रहा हूँ, 10 power 4 बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो गया, गामा आर इज इक्वल्स टू 9.9 into 10 power minus 2 ले, तो T value will be equal to 99 divided by 9.9 into 10 power minus 2, and that will be 99 divided by 10 into 10 power minus 2. So ये वाला भी चला जाएगा, so this will be equal to 10 divided by 10 power minus 2, and this will be 10 power 3, and that will be equal to 1000 degrees Celsius. Okay? या 10 पावर माइनस 1 ले लीजिए और चेंज होते जाएगा, वो जस्ट प्रॉब्लम के हिसाब से आप थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए, ठीक है ना, हमें क्लियर। थोड़ा सा और एक एग्जांपल ले लीजिए इसी पे बेस पे, फाइंड
ठीक है बेटा, आप लोग चले जाइए, वैसे भी रिकॉर्डिंग में जा रहा है, आप बाद में भी आके ज्वाइन कर सकते हैं। Find the temperature हाँ हीट होगा, मैं हो रहा हूँ। लैपटॉप थोड़ा ज्यादा हीट हो गया था। Find the temperature at which density of liquid. This is also a good question. ठीक है, find the temperature at which the density of the liquid is 1% less than its density at 0 degrees Celsius if gamma R is coefficient of real expansion of liquid. Gamma R is coefficient of real expansion of liquid. चलो एक बार ट्राई करिए सभी लोग इसको। And the temperature at which the density of the liquid is 1% less than its density at 0 degrees Celsius. If gamma R is the coefficient of your real expansion of your liquid. ठीक है ना? फॉर्मूला क्या है? Density at 0 degrees Celsius is equals to density at T degrees Celsius into 1 plus gamma of real into temperature. तो density at T degrees Celsius कितना बेटा? Density at T degrees Celsius is 1% less than density at 0 degrees Celsius. ठीक है ना? यानी rho naught will be equal to rho T is equals to 1% less, यानी rho naught divided by 100 into 1 plus gamma real into temperature T. So rho naught cancel हो गया. So this will be equal to 100 is equals to 1 plus gamma real into T. ठीक है ना? तो ये कितना बन जाएगा? 100 minus 1 99 is equals to gamma real into T. Find the temperature बोल रहा है ना? So temperature will be equal to how much? T is equals to 1 by 99 times of your gamma. So T is equals to 1 by 99 times of your gamma of real. Unit will be per degree Celsius. ठीक है? चलिए एक लास्ट टॉपिक है, जल्दी खत्म कर देंगे, then you can go for your सलाह. Next one. Anomalous expansion of water. Anomalous expansion of water. You want to take a break, you can take a break and come back. तुम लोग को नमाज पढ़ लेना है तो 5 मिनट नमाज पढ़ लेके आ जाइए.
I'll wait. Maghrib is at 7. क्या टाइम हो 6:30. अच्छा we have half an hour more. मैं असर की नमाज के लिए बच्चे पूछ रहे थे शायद जब कॉलेज में थे करते थे पढ़े नहीं. Maghrib is at 7, so can I take till another half an hour? I can make it out. नहीं जाना है. छोटा सा टॉपिक है बेटा, हो जाएगा तो फिर आप लोग रिकॉर्डिंग में भी आप लोग सुन सकते हो. Anyhow, we got it option there. तो मैं कंटिन्यू कर लेता हूँ. Anomalous expansion of your water. देखो, this water has a very peculiar nature, but this is only the liquid which is having such a peculiarity that थोड़ा स्ट्रेंज बिहेव करता है, इसलिए हम लोग इसको एनामलस बोलते हैं. एक अलग तरह का जादुई लिक्विड जैसा बोलते हैं ना, उस तरह से अनहोनी लिक्विड. तो इन जनरल क्या होता है, इन जनरल all liquids, in general all liquids expand on heating, but water contracts from 0 degrees Celsius to 4 degrees Celsius and expands from 4 degrees Celsius to 100 degrees Celsius. This is the peculiarity. क्या है यहाँ पर, water जो है ना, water will contract from your 0 degrees Celsius to 4 degrees Celsius. ठीक है ना, and it expands from your 4 degrees Celsius to 100 degrees Celsius. ठीक है ना, इसको मैं छोटा सा यहाँ पर लिखता हूँ. 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक लिक्विड जो है ना, जब जा रहा है इट विल कॉन्ट्रैक्ट, और 4 डिग्री से जब 100 डिग्री सेल्सियस तक जा रहा है इट विल एक्सपैंड. अब इसका उल्टा, अगर 100 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक आ रहा है तो इट विल कॉन्ट्रैक्ट, और 4 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक जा रहा है तो इट विल एक्सपैंड. So that is the reason aquatic animals are surviving in the cold countries. ठीक है ना, ये वाला भी important point है. Water has maximum density. Water has of your maximum density, or I can say that minimum volume. Because density is inversely proportional to volume at 4 degrees Celsius. Or I can say that 277 Kelvin or 39.2 degree Fahrenheit. ठीक है ना, very important point, very important point. Water has maximum density बोलो या minimum volume बोलो, at what temperature? At 4 degree Celsius बोलो या 277 Kelvin बोलो या 39.2 degree Fahrenheit के पास. ठीक है ना, अगर मैं इसके रफली ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ आपको, वॉल्यूम ऑन वाई एक्सिस एंड टेम्परेचर ऑन टी एक्सिस. तो इनिशियली वॉल्यूम ज्यादा रहेगा 0 डिग्री सेल्सियस पे, जैसे जैसे ऐसा आएगा टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा, जैसे मान के चलो 4 डिग्री सेल्सियस के पास मिनिमम होगा, फिर उसके बाद बढ़ जाएगा. ठीक है, वॉल्यूम वर्सेस टाइम का ग्राफ है. उसी तरह से इफ आई एम ड्रॉइंग द ग्राफ ऑफ योर डेंसिटी वर्सेस योर टाइम इन डिग्री सेल्सियस ही लिख रहा हूँ बेटा, दिस इज ऑल्सो इन डिग्री सेल्सियस. ठीक है, तो 0 डिग्री सेल्सियस के पास बहुत कम, और जैसे टेम्परेचर बढ़ा डेंसिटी आल्सो विल इंक्रीज, फिर उसके बाद डिक्रीज. तो दिस विल बी द मैक्सिमम एट व्हाट टेम्परेचर बेटा, इट विल बी मैक्सिमम एट योर 4 डिग्री सेल्सियस. मैक्सिमम का पॉइंट यहाँ लिख रहा हूँ मैं, सो दैट विल बी इक्वल टू मच 4 डिग्री सेल्सियस के पास. ठीक है ना, talking about 1 gram of your density is nothing but for 1 gram per cc of the density. क्लियर? ठीक है ना, अगर ये लेक है और उसके ऊपर मान के चलो अगर बर्फ बन चुका है इस तरह से, जैसे कोल्ड कंट्रीज में बनता है ये वाला बर्फ, दिस इज टोटली राइट नाउ फॉर मी व्हाट, आइस. This is your ice.
0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और ऊपर टेम्परेचर जो हो जाएगा और नीचे टेम्परेचर हो जाएगा। सो दिस इज यहाँ पर टोटली अभी वाटर, ठीक है। सो दिस वाटर इज एट योर 4 डिग्री सेल्सियस नीचे, या बोलो 277 केल्विन के पास, ठीक है। और यहाँ पर हो गया 0 डिग्री सेल्सियस इसके नीचे, या मान के चलो 273 केल्विन के पास। और ऊपर जो हो जाएगा टेम्परेचर यहाँ पर -0 डिग्री सेल्सियस, या माइनस थीटा टेम्परेचर लिख लो किसी का, चलो कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर हो गया -थीटा डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। चलिए, ये ग्राफ्स इंपॉर्टेंट है बेटा। 4 डिग्रीज के पास वॉल्यूम डिक्रीज होगा और 4 डिग्रीज के पास डेंसिटी इंक्रीज होगा, ठीक है ना। छोटा एक इनोवेटिव क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा 100 टाइम्स इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है। जरा सोच समझ के देने की कोशिश करो आंसर आप। क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पर, मेरे पास 2 वेजल्स है, A and B, which are completely filled, with water at 4 degrees Celsius, ठीक है। If vessel A is cooled, जरा सोचो बेटा, and vessel B is heated, ठीक है, what is your inference? है ना, आप क्या सोच रहे हो? इसके बारे में आपको क्या समझ में आ रहा है? वो रिजल्ट ए एंड बी में क्या होगा, क्या समझ में आ रहा है पूरे? 2 vessels A and B are completely filled with water at 4 degrees Celsius, and if vessel A is cooled and vessel B is heated 4 degrees के पास, अगर मैं इसको देखो, अगर कूल कर रहा हूं तो एक्सपैंड होगा, हीट कर रहा हूं तो भी एक्सपैंड करे। तो दोनों केसेस में क्या हो रहा है? एक्सपैंड ही हो रहा है ना बेटा। बोथ विल एक्सपैंड, वेरी गुड, एक्सेलेंट। सो in both cases it expands, ठीक है ना। देखो यहाँ पर अभी लिखा मैंने, ये इसको इसको देखो, 4 डिग्री सेल्सियस से अगर आप कूल कर रहे हो यानी ऐसे जा रहे हो तो एक्सपैंड हो रहा, 4 डिग्री से आप एक्सपैंड कर रहे हो, बढ़ रहा है टेम्परेचर तो एक्सपैंड होगा। 4 से बोल रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट फ्रॉम 4 डिग्री सेल्सियस। am I clear with this one? am I clear with this one? आया सभी को कुछ? I'll send you the notes, आप लोग आराम से नोट्स लिख लो, इसके ऊपर अपन प्रॉब्लम्स कर लेंगे, ठीक है ना। अरे बेटा मैं बहुत पीपीपीस भेजा आपको, आज कितने भेजा देखा है आप लोगों ने, कर लिया आप लोगों? अनीस फातिमा, पूरे क्वेश्चंस क्लास नोट्स में लिख के रखना, जितने भी आप लोगों को मैंने भेजा है ना क्वेश्चन और सोल्यूशन इसके नीचे, बाद में परेशानी नहीं होना।
वॉइस को भी मिला, नहीं मिला तो एक बार उनको पूछ लीजिए। डन बेटा। सभी लोग जा रहे हैं, चैप्टर हो गया समझ रहे, ठीक है। मैं भी चले जाता हूँ। सुकून। क्वेश्चन करिए बेटा, वीडियो दिस। Gamma A of liquid is 7/8 of gamma R of liquid. ठीक है। Alpha of glass of vessel is how much? Alpha of glass will be equal to how much? चलो बताइए जल्दी से। गामा अपैरेंट कितना दे रखा है? 7/8 टाइम्स ऑफ गामा रियल। तो गामा रियल का फॉर्मूला, गामा रियल इज इक्वल्स टू गामा अपैरेंट प्लस 3 times of alpha of glass. And a gamma real will be equal to 7/8 times of gamma real plus 3 times of alpha of glass. ठीक है नहीं? यानी 3 times of alpha of glass will be equal to 7/8 minus 1 कितना हो जाएगा? 1/8. 1/8 times of gamma r. So alpha of glass will be equal to कितना हो जाएगा? 3 8 is 27. Sorry 24. 1/24 times of gamma real. ठीक है ना? वेरी गुड। आया बेटा? चलिए। One more question. Densities of a liquid at 30 degrees Celsius and 80 degrees Celsius.
densities of liquid at 30 degrees Celsius and 80 degrees Celsius are 0.6 gram per cc and 0.54 gram per cc. Question is the coefficient of real expansion. The coefficient of real expansion of liquid is कितना होगा जल्दी से बताइए. जल्दी बताइए. Coefficient of real expansion का density का फॉर्मूला बेटा gamma real is equals to d1 minus of d2. d1 minus of d2 divided by यहाँ पर हो जाएगा d2 into temperature difference. कितना आ रहा? Which formula we have to use? देखो d1 d2 दे रखा है ना बेटा. तो गामा इज इक्वल टू ρ1 माइनस ρ2 डिवाइडेड बाय ρ2 into डेल्टा टी. डायरेक्ट फॉर्मूला है ना बेटा. d1 की वैल्यू दे रखा है 0.6 minus this one is 0.54 divided by this will be 0.54 into temperature difference 80 minus 30. ठीक है ना? कितना आ रहा देखो 0.6 minus 0.54 कितना आ रहा? This is 0.06 divided by 0.54 multiplied by 50 minus 80 minus 30 कितना होता है बेटा 50. Very good. So now 50 into 0.54 की value 54 5s are approximately 50 into 0.54 value is 0.06 divided by 27. ठीक है ना? This will be approximately like 0.002 something per degree Celsius. 9.8. थोड़ा कैलकुलेशन देख लेते हैं. ठीक है. One more question. If on heating a liquid to 80 degrees Celsius, the mass expelled is 1 by 100 mass still remaining. ठीक है. The coefficient of apparent expansion of the liquid is, चले बताइए. फॉर्मूला मालूम है आप लोग को? अभी करवाया था मैंने. gamma apparent will be equal to expelled divided by, क्या हो रहा है, expelled divided by remaining into temperature difference. ठीक है.
एक्सपेल्ड कितना है बेटा 1/100th ऑफ द मास रिमेनिंग मान के चलो m है तो इट इज 1/100 टाइम्स ऑफ योर m डिवाइडेड बाय m इनटू टेम्परेचर डिफरेंस कितना है बेटा 80 this will be 80 so mass will get cancelled so this will be equal to 1/80 into 100 and this will be 1/8 into 1/10 power 100 and 100 मतलब 10 power 3 and this will be 10 power minus 3 divided by 8 1/8 कितना है देखो बेटा 1/8 is approximately 0.125 into 10 power minus 3 ठीक है ना अब ऑप्शन में डिपेंड करेगा कि हाउ इज गिविंग इसको मैं और थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखूं तो कैन आई राइट दिस वन समथिंग लाइक दिस 1.25 into 10 power minus 4 per degree Celsius ठीक है ना हो गया Please try to complete the expansion of liquids एक बार मैं पूरी आपको नोट्स भेज दूंगा वैसे भी आप लोग को ऑनलाइन पे भी मिल जाएगा एक बार रिवीजन करना है तो कर लीजिए अगर तुम्हारा कॉलेज रहा है तो अच्छी बात है नहीं बोले तो एक्सपेंशन ऑफ गैसेस भी स्टार्ट कर लेंगे इस पे आज मैं आप लोगों को असाइनमेंट भेज दूंगा ठीक है बाय समझ में तो आ रहा है ना आप लोगों को ऑनलाइन में मुश्किल हो रही है मुश्किल हो रही है काफी आसान इतना डिटेल में तो लिख रहा हूँ बेटा मैं आप लोग डिटेल में नोट्स भी लिख रहा हूँ आगरा भी हर कॉन्सेप्ट के पीछे मैं आप लोग को प्रॉब्लम भी करवा रहा हूँ और कैसे हल्लू होना चाहिए और हल्लू होता है एक क्लास वो भी आई घंटे उससे ज्यादा लिखते हुए पढ़ा रहा हूँ बेटा आगरा भी नहीं और कॉन्सेप्ट के नीचे भगवान रोटू नहीं दिया बेटा नहीं यूज दैट